Hello, friends, and welcome back to another episode of Money Mindset Mastery with Vikas Joshi, LAP2, Beyond Passbook Balance. Friends, before we begin with today's topic, I appeal to all of you, if you love this series, please like, share, and subscribe, as it motivates me to create more such content. So let's start. Today's topic is it's easy to get into debt, but hard to get out. The hidden truth. क्यों? उधार की जिंदगी में चैन नहीं है आता। उधार की जिंदगी में चैन नहीं है आता, ब्याज की आग में सपना है जल जाता। असली अमीरी पैसे में नहीं, पर उन फैसलों में है जो कर्ज से है हमें बचाता। दैट इज द टॉपिक वी आर टॉकिंग ऑफ टुडे फ्रेंड्स। आजकल तो सब कुछ क्रेडिट में मिल रहा है ना। सो इन टुडेज वर्ल्ड यू डोंट नीड मनी टू बाय समथिंग, इट जस्ट क्रेडिट। बट व्हाई डेट एंटर्स silently, it lives with noise, sleepless nights, mounting bills, and dreams on pause. आपको उस वक्त अच्छा लगता है क्योंकि पैसा अकाउंट में आ चुका है, बट द डेट ट्रैप is already begun. So, in this episode of Money Mindset Mastery Beyond Passbook Balance, we dive into why it's easy to fall into the debt and what it truly takes to climb out. This might just be the financial wake-up call you didn't know you needed. ये जरूरी था, ये अलार्म आपके लिए बहुत जरूरी है, because this financial wake-up call will help you to build your finance, to help you in your financial stability. So in today's fast-paced world, the consumer world, getting into debt is easier than ever. पहले तो बहुत कुछ लगता था, पहचान लगती थी, आइडेंटिटी लगती थी, क्या क्या। आजकल वो कुछ लगता ही नहीं है, सब ऑनलाइन है। सो द क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स, बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स एंड ईएमआईज हैव टर्न्ड द लग्जरीज इनटू अपैरेंट नेसेसिटीज। दुकान में खरीदी करने चले जाओ, वो तुरंत बोल देता है, कोई चिंता नहीं है, हमारे पास ये फला फला ईएमआई स्कीम है, एंड दे लिटरली ल्यूर यू इनटू द डेट ट्रैप. So the financial institutions make credit as empowerment. And we often fall into the trap of believing that borrowing is the same as affording. हम अपने आप को समझा देते हैं, तो मेरा ही पैसा है ना, तो मैं दे ही रहा हूं ना, एक साथ क्यों देना, जबकि मैं थोड़े थोड़े अमाउंट से दे सकता हूं. ओह, you are falling into a trap because now you are making yourself believe that you are affording it. मंथली बेसिस में ईएमआई दे ही रहा हूं ना, तो अफोर्ड मैं कर सकता हूं. ये जो अपने आप को समझा रहे हो, यही गलत है. The phrase is, it's easy to get into the debt, but hard to get out, isn't just a caution, it's a financial truth we must confront. Don't believe and make yourself affordable with EMIs. This episode of Money Mindset Mastery Lab 2 Beyond Passbook Balance focuses on uncovering the hidden psychology and system behind debt traps and how they silently sabotage not just our bank balance but our peace of mind, relationship, and long-term dreams also. So friends, if you have got good dreams, please, first and foremost step is don't fall into any debt trap. These are the invisible chains of modern debts. Debt often starts with small, seemingly harmless decision. Swiping a credit card for a new phone, booking a vacation on EMI, और opting for zero cost monthly payments. ये तो आजकल कॉमन है. जीरो बैलेंस, जीरो कॉस्ट, जीरो इंटरेस्ट है ना. कुछ भी खरीदी करने जाओ, ईएमआई अवेलेबल किया गया है आजकल. Credit card payments are available, but each of these decisions, if not made consciously, starts creating a psychological and financial dependency. शुरू में बहुत अच्छा किया, but unplanned things, the EMIs is now asking you to keep your dreams on hold. It is better that you don't keep your dreams on hold, but work for your dreams to accomplish them.
in a more faster way, in a more proper way, whereby you will be financially stable. So the illusion of affordability leads to overspending. आपको लगा मैं तो अफोर्ड कर सकता हूं इसलिए मैं ईएमआई भर सकता हूं. अरे ये दिस इज नॉट अ लॉजिक दैट यू शुड अप्लाई इन दिस ईएमआई केस और इन द डेट ट्रैप. इट इज अ ट्रैप whereby you are getting lured by the things, and you are making yourself comfortable by saying that you can afford the EMIs. What's invisible is the emotional burden the debts create. Even if monthly installments feel manageable, the long-term cost is often stress, reduced savings, and compromised freedom. ये तो होना ही है. शुरुआत में अच्छा लगा, अरे उसमें क्या है, इतना तो मैं भर ही सकता हूँ. लेकिन वही मंथली बेसिस पे आपका सेविंग कम हो गया, फाइनेंशियल एक्यूमुलेशन हो रहा था लेकिन वो तो कम ही हो गया. फाइनेंशियल एक्यूमुलेशन को तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम हो गई. दैट इज हाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेस पासबुक बैलेंस. द इंटरेस्ट वी पे इजंट जस्ट फिनेंशियल, नो, इट्स मेंटल एंड इमोशनल, इरोडिंग अवर कॉन्फिडेंस एंड डिलेइंग अवर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. जो इंडिपेंडेंस थी, अगर आप प्लानिंग के साथ करते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था. तो आपको विदाउट ईएमआईज, विदाउट लोन्स, विदाउट डेट, you could have achieved everything you wished. So the deeper debt trap is going beyond the, in our this lap to the passbook balance. If we are talking about going beyond the superficial numbers in your passbook, you may see a stable account balance. है account में balance है. But if you are juggling with multiple EMIs, having unpaid credit card bills, or rely on not truly wealthy, you are financially vulnerable. You are relying on loans to maintain your lifestyle. So you are financially vulnerable. You are not living your lifestyle. You are not truly wealthy. So पासबुक बैलेंस तो अच्छा दिखा, लेकिन ये सारे जाने वाला है. इसका ईएमआई गया, उसका ईएमआई गया, उसमें ही चला गया. आजकल तो ऑनलाइन में सब्सक्रिप्शन का एक बड़ा पार्ट है. We are also not, we didn't give attention while subscribing to something paid subscriptions. अच्छा लगा मुझे, है मैं इतना तो मैं भर ही सकता हूँ, ओके भर दिया. Whether you are utilizing it, whether you are emotionally sound to, or you are emotionally happy, I should say, no. तो पासबुक बैलेंस दिख रहा है लेकिन जा रहा है. So you are financially vulnerable. The debt creates a false sense of security where you appear to be doing fine, but beneath the surface your cash flow is constrained. This duality is dangerous because it allows you to postpone urgent financial discipline. What is urgent? Financial discipline. Why? Because this series dedicated to move you towards financial stability. Financial accumulation नहीं, पासबुक के नंबर्स देखने से सफिशिएंट नहीं है. अगर ईएमआई से ही जगलिंग कर रहे हो तो आर यू स्टेबल? नो. सो इन ट्रूथ एवरी रुपी ऑफ डेट इज अ क्लेम ऑन योर फ्यूचर इनकम, है ना. जो फ्यूचर इनकम आने वाला तो वो भी अपने डेट में लगा दिया है. सो इट्स वेल्थ मूविंग इन रिवर्स वे. स्टेबिलिटी आने वाली नहीं है. एक्यूमुलेशन आया चला गया, पासबुक बैलेंस दिखा लेकिन वो तो जाने वाला है. सो इट इज द रिवर्स वे. So most people don't fall into debt due to lack of income. They fall due to mindset. They need the need. उनको लगता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, अभी पैसा नहीं है लेकिन मेरा पैसा आएगा कल, तो आज ही मैं कर्ज में डूब जाऊं, तो कल पैसा आएगा वो कर्ज में चला गया. That is what the mindset is. आज तात्काल चाहिए सब कुछ. Because we are living in that world. हमें हमेशा दूसरों की चीजें बहुत अच्छी लगती है. इसके पास कैसे इतना पैसा आया? We are not thinking what we are doing. We are not thinking on what our basics are. What are our requirements? So they fall into this mindset trap. They need instant gratification. The pressure of to impress others
एंड इमोशनल स्पेंडिंग क्रिएट डेंजरस कॉम्बिनेशन, है ना? मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, उसके पास भी है तो मेरे को भी चाहिए। भाई मेरे, यू शुड प्लान योर फ्यूचर not by comparing others, by facing the reality of what you are. So, buying something on credit releases a dopamine hit, making us feel rewarded and powerful. But the crash comes when the bill arrives. पहले तो अच्छा लगा, अरे है मेरे पास, मैं कर सकता हूँ, अरे अगले महीने में मेरा फला फला का पैसा आने वाला है तो मैं उसमें पैसा डाल दूंगा, नथिंग. सो द इनकम हैज नॉट yet come. You have already created a debt against that. तो आपके पास पैसा कहाँ से आने वाला है? वो पासबुक में आएगा, पासबुक दिखेगा, अरे वाह, लेकिन वो चला गया क्योंकि ईएमआई चला गया. सो एट द मोमेंट वी फील रिवॉर्डेड एंड पावरफुल, लेकिन जब बिलिंग होता है तो ये सारे सपने खड़ाक से टूट जाते हैं. सो दिस बिहेवियरल लूप कीप अस इन द डिनायल मोड. वी जस्टिफाई बैड स्पेंडिंग हैबिट्स with phrases like it's just a small EMI or I will manage in the next month, है ना? अरे उसमें क्या है, इतना सा तो है, मैं अगले महीने में मैनेज कर ही लूंगा. So recognizing this psychological pattern is key to breaking free from the debt cycle and truly transforming your money mindset. Please recognize this cycle. ये जो अपने आप को समझा रहे थे, ये तो स्मॉल EMI है, मैं अगले महीने में एडजस्ट करूंगा, वो पैसा आने ही वाला है, उधर से आएगा, वो दे देगा, ये जो आपके कैलकुलेशंस है, डोंट गो बाय दैट. मैं आपसे कहूँ, गो टू द बेसिक्स. एक नोटबुक लेना, उसमें लिख देना, राइट इट डाउन, एंड देन यू विल रियलाइज व्हाट यू आर. करके देखना फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है. ये बहुत एज ओल्ड, वी हैव फॉरगॉटन ऑल दिस एज ओल्ड पैटर्न मेथड्स. Whenever you think of something, please take a piece of paper, or I should say you should prepare your personal notebook, write it down on that, close it, and after 5 minutes open it and think over it, and now you will realize what you are doing. This will transform your money mindset. The silent cost of debts is many. One of them is the worst is missed opportunities. So one of the greatest hidden cost of debt is opportunity loss. Every EMI you pay towards a loan is money not invested in building assets. Correct? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी नहीं रही है, कहां से बनाओगे? जो आया पैसा वो ईएमआई में डाल दिया, तो आपका स्टेबिलिटी कब आने वाला है? नहीं हो रहा है. सो इंस्टेड ऑफ अर्निंग द इंटरेस्ट, यू आर पेइंग इट. ओवर इयर्स दिस डिफरेंस एड अप टू lakhs of rupees. What could have been invested in SIPs, equity, gold, or skill building, or learning, or getting more knowledge, whereby you can create your own assets? It goes towards servicing the past indulgences. Debt also reduces your risk-taking ability. अब EMI इतने जा रहे हैं तो रिस्क कहाँ से लोगे? You have got less cushion to work on. So you hesitate to pursue new ventures, to make life transitions because your income is already pledged. नई सोच के लिए, नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो क्वेश्चन आपको होती है, वो थी आपके पास होने वाला पासबुक बैलेंस. अब वो पासबुक बैलेंस आपने ऑलरेडी प्लेज कर दिया ईएमआईज की तरफ. सो यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू टेक एनी रिस्क, टू टेक एनी फाइनेंशियल डिसीजन. नहीं कर पा रहे हो. सो द फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न. It's about how free you are to use when you earn. That is the basic difference. So debt compromises that freedom. वो freedom आपका चला गया ना, क्योंकि you already compromise your financial balance to your EMIs, your debt. So from debt slave to money master is the process. You have to escape the debt. It requires more than budgeting. It demands a shift in mindset. पहले अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बनाइए कि नहीं, मुझे इस लाइन पे ऐसे नहीं जाना है. बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिक्वायर्स डिसिप्लिन. फाइनेंशियल एक्यूमुलेशन डजंट रिक्वायर डिसिप्लिन. पर्सनल लोन आ गया, पासबुक बैलेंस में पासबुक बैलेंस बढ़ा हुआ दिख रहा है,
अरे लेकिन लोन का ईएमआई जा रहा है, सो फ्यूचर आने वाला इनकम आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया ईएमआई की तरफ. दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड, दैट आई विल नॉट बी फॉलोइंग इनटू दिस ट्रैप. So you have to begin by owning your own numbers. Calculate your total debt, interest rates, and monthly obligations. Then restructure. Pay off high interest debts first. जो बर्डन लेके चल रहे हो, धीरे धीरे इसको एनालाइज करो. पहले हाई इंटरेस्ट जो डेट्स है उसे पहले खत्म करो. अवॉइड मिनिमम पेमेंट्स. ऑलवेज पे मोर देन द ड्यू. Now, this advice can be taken in consultation with the institutions from where you have taken any debt or any loans, because paying off these things in one go may be costly also. They may be charging more amount. You will have to calculate that. So, create a debt snowball or debt avalanche. That is what the plan you have to create. धीरे धीरे आपको पहले ये बंद करूंगा फिर वो बंद करो, फिर ऐसे आपको करना पड़ेगा. देन ओनली योर फाइनेंशियल accumulation will be getting converted into financial stability. So beyond the numbers, promise yourself this: I will not borrow for things that lose value. I will not buy to impress. I will not trade my peace of mind for short-term pleasures. This commitment is where financial maturity begins, and it is the core teaching, or you may say this is the core line for LAP2, that is Money Mindset Mastery with Vikas Joshi, LAP2 Beyond Passbook Balance. ये सोच ही बदलनी है हमको. किसी दूसरे ने लिया इसे मेरे पास होना चाहिए, नहीं, हमें अपने आप के बारे में देखना चाहिए और हमें उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए. So stay out of debt cycle, cultivate habits that empower you. Live below your means, not just within them. Use cash or debit for daily expenses. Maintain an emergency fund equal to 3 to 6 months of expenses. ये इमरजेंसी फंड आपने तैयार करके रखना चाहिए. Invest regularly. Even a small amount builds discipline. Practice delayed gratification. Wait for 7 days before making any major purchase. ये इंपॉर्टेंट है. कोई भी बड़ी चीज खरीदनी है तो 1-7 दिन रुको, लिख के रुको. देन यू एनालाइज व्हाट यू आर हैविंग, व्हाट पासबुक बैलेंस यू आर हैविंग, एंड वेदर you can do it now, and then go into that. Surround yourself with a mindset community that values financial clarity over appearance. Remember, it's not about being stingy, it's about being strategic. These habits aren't restrictions. They are the building blocks of your financial freedom. Debt is easy. लोन देना आसान है. आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन. So debt is easy because it tempts you with false control. But real control is when you don't need debt at all. When your lifestyle is driven by clarity, not by credit. When your choices are aligned with your goals, not by your impulses. So here we go beyond counting money to understanding its purpose. In this series, we are trying to help you to understand the purpose. Break free from debt, not just financially, but mentally also. Because when you reclaim control over your finances, you also reclaim control over your life. And that, my friends, is the true balance that goes beyond the passbook balance. इसलिए मैंने कहा, उधार की जिंदगी में चैन नहीं है आता, ब्याज की आग में सपना है जल जाता. असली अमीरी पैसों में नहीं, असली अमीरी पैसों में नहीं, पर उन फैसलों में है जो कर्ज से है हमें बचाता. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Money Mindset Master with Vikas Joshi. Till then, bye-bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.